uh, today on topic arithmetic progression as a AP arithmetic progression name as arithmetic progression और समांतर श्रेणी और arithmetic progression as a sequence arithmetic progression सिंपल टॉपिक है एज ए सिक्वेंस जिसमें ईच टर्म हैज़ अ इक्वल डिफरेंस एज वी टेक टर्म्स ए प्लस डी ए प्लस 2d अप टू nth term a plus n minus 1d. You know all terms has equal difference as d. First term no d, सेकंड टर्म में फर्स्ट डिफरेंस यानी कि 1d, थर्ड टर्म में 2 डिफरेंस यानी कि 2d, ऐसे ही एक लेस देन एज द थर्ड टर्म 2, फोर्थ में 3, ऐसे ही n टर्म्स में n माइनस 1d. सो जनरल टर्म्स ऑफ nth टर्म्स ऑफ ए सिक्वेंस AP is equal to a plus n minus 1 into d. When we take from last, as we know a plus d, a plus 2d, and as last l minus d, l minus 2d. So we take from the last term, difference is d but in sign change because this is the decreasing order, so d as take minus d. Hence from nth term from n, l is equal to n minus 1 into d. This is a simple formula from the end, from the beginning, from the end, from n terms. Next, sum of n terms formula as a sum of n terms represent Sn, so we write as a plus d, a plus 2d, so represent as last term l minus d plus l minus 2d and so on. If we write them as a vice versa or order may be changed, so no difference as a plus b or b plus c, because you know sum is distributive, so l minus d, l minus 2d as first term l a plus d, a plus 2d, and we add both relations because we take terms of total n, so this is sum of n terms twice, and each term a plus l, d कट जाएगा, a plus l, now 2d also neglect, a plus l, similarly d फिर कट जाएगा, a plus l also a plus l and a plus l. Hence we see all terms as a plus l, a plus l, a plus l. So this is the terms total n. So sum of n a plus l is equal to twice of sum of n terms. Now we derive as sum of n terms formula Sn is equal to a plus l, but we take l as an nth term, so we write them a as n minus 1 into d. This is the nth term we take as l, so value put up in the formula a plus and l की value a plus n minus 1 into d. So we write them n upon 2a n minus 1 into d. This is the formula of Sn. Both formula apply in a sequence of SN AP
एंड दिस इज द an मीन्स अर्थमेटिक टर्म्स का n टर्म। नेक्स्ट में आता है अर्थमेटिक मीन एज वी नो am when two terms a and b take a terms between them known as arithmetic mean. According to concept of AP, each term difference is equal to d and this is also equal to d. So by the difference am minus a is equal to b minus am, so 2 arithmetic mean is equal to a plus b और अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a plus b upon 2. So sum of two numbers dividing by 2 we get a arithmetic mean of the given numbers. Now when we put as a arithmetic mean more than 1 2 3 up to 2 given the given terms as a and b and we put the mean as n, a1 a2 a3 up to an. Now we see the total term of given sequence n plus 2, n terms as the mean and first and last, so n plus 2, so b is the n plus 2 term, hence we put the formula a plus n plus 2 minus 1 is equal to d. Now we solve it, b minus a upon n plus 1 is the difference of given sequence. If we make a sequence a and b by the different arithmetic mean of the n, so we make a difference is d. This is simple concept of a arithmetic sequence. Only given topics are related to questions, और any question में अगर हम 3 term लेते हैं तो this is make to easier a minus d for 3 terms a plus d, बिकॉज गिवन सीक्वेंस क्या होता है कि सम गिवन होता है तो इसमें d हमारा कट जाएगा और 3 से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। अगर इसी तरह हमारे पास 4 टर्म हो तो a माइनस 3d, नेक्स्ट टर्म a माइनस d एंड a प्लस d और लास्ट टर्म यानी कि 4th टर्म a प्लस 3d. बट वी नो इसमें डिफरेंस d था बट इसमें डिफरेंस 2d है. नोट दिस पॉइंट. एंड सीक्वेंस एज अ 4th टर्म a minus 3d a minus d, when we difference of second minus first we take 2d. डिफरेंस 2d आता है तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट का. और अगर 5 टर्म लेनी होती हैं तो उसमें हम लेते हैं a minus 2d a minus d a plus d और a plus 2d. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपके इस कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं. सो इट इज़ क्लियर टू कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्लीज़ वॉच, लाइक एंड share my video and subscribe my channel.